अब इन एमसीक्यूज को देख लीजिए, ठीक है ना। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 811। क्वेश्चन नंबर 811 पूछ रहे हैं वेयर ऑर्बिट इज सीन इन। क्वेश्चन है वेयर ऑर्बिट इज और आर सीन इन। तो क्वेश्चन लिखिए वेयर ऑर्बिट सीन इन। वेयर ऑर्बिट इज सीन इन। ऑप्शन 1 मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। ऑप्शन 2 न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। ऑप्शन 3 ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा। या ऑप्शन 4 ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। या ऑप्शन 5 स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई, स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई, सेरेब्राई। फिर से देखिए वेयर ऑर्बिट इज सीन इन। मेटास्टेसिस, न्यूरोब्लास्टोमा, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा, ऑस्टियोमाइलाइटिस या स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई। एंड द राइट आंसर इज मेटास्टेसिस। राइट आंसर इज मेटास्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 811 देखिए। क्वेश्चन नंबर 811 ट्रू अबाउट वर्चुअल कोलोनोस्कोपी। ट्रू अबाउट वर्चुअल कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या होती है? ऑप्शन 1 प्रोवाइड एंडोलुमिनल व्यू, प्रोवाइड एंडोलुमिनल व्यू, प्रोवाइड एंडोलुमिनल व्यू। ऑप्शन 2 biopsy can be taken, biopsy can be taken, biopsy can be taken. Option 3 CT and MRI are used, CT and MRI used. Option 4 used even when conventional colonoscopy fails, used even when conventional colonoscopy fails. Your option 5 used for screening of carcinoma colon, used for CA colon screening, used for CA colon screening. Again, to avoid virtual colonoscopy are provide endoluminal view, biopsy can be taken, CT and MRI used even when conventional colonoscopy fails, used for CA colon screening. And the right answer is A, C, D and E. A, C, D and E. biopsy cannot be taken, biopsy cannot be taken. बाकी सब सही है, बाकी सब सही है. Question number 812. Question number 812 radionuclide used in external beam therapy. Radionuclide used in external beam radiotherapy. External beam radiotherapy is option 1 iodine 131, iodine 131. Option 2 cobalt 60, cobalt 60. Option 3 cesium 137, cesium 137. Option 4 radium 226, radium 226. Option 5 iridium 192, iridium 192. फिर से देखिए रेडियो न्यूक्लाइड यूज्ड इन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपीज आयरन 131, कोबाल्ट 60, सीजियम 137, रेडियम 226 या इरिडियम 192. द राइट आंसर इज बी, सी एंड ई. बी, सी एंड ई. कोबाल्ट 60, सीजियम 137 एंड इरिडियम 192. कोबाल्ट 60, सीजियम 137, इरिडियम 192. क्वेश्चन नंबर 813 देखिए. क्वेश्चन नंबर 813 क्या पूछ रहे हैं? लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे इज फॉर्म्ड बाय. लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे, on chest x-ray is formed by
Option 1 aortic arch. Option 1 aortic arch. Option 2 left pulmonary artery. Left pulmonary artery. Option 3 right atrium. Right atrium. Option 4 left ventricle. Left ventricle. Option 5 right ventricle. Right ventricle. फिर से देखिए, left border of heart on chest X-ray is formed by aortic arch, left pulmonary artery, right atrium, left ventricle, right ventricle. And the right answer is A, B and D. A, B and D. Aortic arch, left pulmonary artery and left ventricle. Aortic arch, left pulmonary artery and left ventricle. Question number 814 देखिए. Question number 814. Low dose radiation cause. Low dose radiation causes. Low dose radiation causes. Option 1 lung cancer. Lung cancer. Option 2 AML. AML. Option 3 cervical cancer. Cervical cancer. Option 4 glioma. Glioma. Option 5 meningioma. Option 5 meningioma. We say low dose radiation causes lung cancer, AML, CS cervix, glioma, meningioma. And the right answer is A, B, D and E. Lung cancer, AML, glioma, meningioma, but not CS cervix. Low dose radiation causes lung cancer, AML, glioma, meningioma, but not CS cervix. Question number 815 देखिए. Question number 815. क्या पूछे? Features of delirium is or are. Features of delirium. Features of delirium कौन कौन से है? Option 1 visual hallucination. Visual hallucination. Option 2 clouding of consciousness. Clouding of consciousness. Clouding of consciousness. Option 3 attention deficit. Attention deficit. Attention deficit. Option 4 altered sleep-wake cycle. Altered sleep wake cycle. Option 5 autonomic dysfunction. Autonomic dysfunction. Autonomic dysfunction. Again, features of delirium are visual hallucination, clouding of consciousness, attention deficit, altered sleep-wake cycle, autonomic dysfunction. The right answer is all of the above. All of the above. That is visual hallucination, clouding of consciousness, attention deficit, altered sleep-wake cycle, and autonomic dysfunction. Features of delirium are visual hallucination, clouding of consciousness, attention deficit, altered sleep-wake cycle, autonomic dysfunction. Question number 816 देखिए. Question number 816 क्या बोल रहा है? Not an indication for use of anticonvulsant. Anticonvulsant used for all except. Anticonvulsant used for all except. Option 1 chronic pain. Chronic pain. Option 2 bipolar disorder. Bipolar disorder. Option 3 anxiety disorder. Anxiety disorder. Option 4 migraine prophylaxis. Migraine prophylaxis. Migraine prophylaxis. या option 5 diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy. Anticonvulsants used for all except chronic pain, bipolar disorder, anxiety disorder, migraine prophylaxis या diabetic neuropathy. And the right answer is none. The right answer is none. मतलब सब में इस्तेमाल करते हैं. क्रॉनिक पेन में इस्तेमाल करेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में इस्तेमाल करेंगे और डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 817. क्वेश्चन 817. डेपॉट प्रिपरेशंस आर अवेलेबल फॉर. डेपॉट
preparation are available for? Depot preparation are available for. Option 1 haloperidol. Haloperidol. Option 2 risperidone. Risperidone. Option 3 olanzapine. Olanzapine. Option 4 imipramine. Imipramine. Option 5 flufenazine. Flufenazine. फिर से डेपॉट प्रिपरेशंस आर अवेलेबल फॉर haloperidol, risperidone, olanzapine, imipramine, flufenazine. And the right answer is A, B, D, E. Haloperidol, risperidone, imipramine, flufenazine, but not for olanzapine. Depot preparations are available for haloperidol, risperidone, imipramine, flufenazine, but not for olanzapine. Question number 818. Question number 818 देखिए. Not given in prophylaxis of BPD. Given in prophylaxis of BPD. Prophylaxis of BPD are all except option 1 lithium. Option 1 lithium. Option 2 olanzapine. Option 2 olanzapine. Option 3 valproate. Option 3 valproate. Option 4 lamotrigine. Option 4 lamotrigine. Option 5 carbamazepine. Option 5 carbamazepine. फिर से given in prophylaxis of BPD are all except lithium, olanzapine, valproate, lamotrigine and carbamazepine. And the right answer is none. None मतलब सभी देते हैं. कौन कौन सा देते हैं? इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ बीपीडी लिथियम देते हैं, ओलेंजापिन देते हैं, वेलप्रोएट देते हैं, लेमोट्राइजिन देते हैं, कार्बामाजेपिन देते हैं. लिथियम देते हैं, ओलेंजापिन देते हैं, वेलप्रोएट देते हैं, लेमोट्राइजिन देते हैं, कार्बामाजेपिन भी देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 819. क्वेश्चन नंबर 819. Delusion of grandiosity seen in. Delusion of grandiosity is seen in. Delusion of grandiosity is seen in. Option 1 hypomania. Hypomania. Option 2 schizoaffective mania. Schizoaffective mania. Option 3 paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia. Option 4 kleptomania. Kleptomania. Option 5 pyromania. Option 5 pyromania. फिर से देखिए delusion of grandiosity is seen in hypomania, schizoaffective mania, paranoid schizophrenia, kleptomania या pyromania. And the right answer is schizoaffective mania and paranoid schizophrenia. Schizoaffective mania and paranoid schizophrenia. इनमें delusion of grandiosity मिलती है. Delusion of grandiosity is seen in schizoaffective mania and paranoid schizophrenia. Question number 820. Question 820 बोल रहा है which of the following is are included in bipolar disease? Included in bipolar disease are. Included in bipolar disease are. Option 1 hypomania. Hypomania. Option 2 cyclothymia. Cyclothymia. Option 3 paranoid disorder. Paranoid disorder. Option 4 hyperthymia. Option 5 kleptomania. फिर से देखिए इंक्लूडिंग बाइपोलर डिसऑर्डर आर हाइपोमेनिया, साइक्लोथाइमिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर, हाइपरथाइमिया, क्लेप्टोमेनिया. एंड द राइट आंसर इज हाइपोमेनिया एंड साइक्लोथाइमिया. Hypomania and cyclothymia. So included in bipolar disorders are hypomania and cyclothymia. Included in bipolar disorder the hypomania and cyclothymia. आज के लिए इतने. थैंक यू.